Hello students. So today I'm discussing this very important question. The question is what? There is a ring of radius r carrying current I. The current is in the anti-clockwise direction. And the center of the ring is at the origin. The center of the ring is at the origin. And this in this space, a magnetic field B is equal to B naught r cap is present. Where r cap is the position vector of any point. R cap is the unit vector in the direction of position vector at any point. So you have to calculate what force will be acting on the ring. आपको जो calculate करना, that is what force on the ring is to be calculated. तो आपको जब रिंग के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना तो से जैसे एक तो बिकॉज आर के का मैग्नीट्यूड 1 है, तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस बी व्हाट सेम, इट्स बी नॉट. अगर मैग्नेटिक फील्ड सब जगह सेम है बी नॉट, तो क्योंकि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हम लोग जीरो भी देंगे और आपको ये चीज याद होगी कि इफ ए करंट कैरिंग वायर लूप इज केप्ट इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी जीरो. तो बहुत से बच्चे इस चीज से कंफ्यूज होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह बी नॉट है यूनिफॉर्म, बट मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. और वेक्टर क्वांटिटी यूनिफॉर्म के तब होता है जबकि उसका मैग्नीट्यूड भी सब जगह सेम होता और डायरेक्शन भी सेम होती. बट यहाँ पे डायरेक्शन तो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है. इट्स अराउंड द आर कैप. दिस इज पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर इस ओर है, यहाँ पे मैंने भी इस ओर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस ओर है, सो आर कैप इस ओर हुआ. तो दैट मींस की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द डिफरेंट पॉइंट्स इज व्हाट, डिफरेंट. सो दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना. अब इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? सपोज आई टेक ए वेरी स्मॉल एलिमेंट dl here. मैं एक छोटा सा एलिमेंट dl है. Length of this element is what, dl. So let's see what is the force acting on this element. Force acting on this element df be equal to bi dl. Bi dl. So b is b naught, I is I, dl is dl. The force acting on this element. And what is the direction of this force? Magnetic field is radially outwards. Current is upwards, anti-clockwise. So force is inverse. Force क्या, inverse. अब देखो यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखना, मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि आपको इंटीग्रेट करके पूरे का फोर्स निकालना है ना. इंटीग्रेट करके यू कैलकुलेट व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द इंटायर. तो इंटीग्रेशन इज व्हाट, algebraic summation. It's not vector summation. Force is a vector quantity और इंटीग्रेशन क्या है, इट्स एन algebraic summation. So that means कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा पहले कि whether the force on different elements is coming to be in different directions or not. Force on the different elements is coming to be in the same direction or not. So see, force on this dl element is what, into the plane of the board. On this element also into the plane of the board. On this element also into the plane of the board. On this element also into the plane of the board. On this element also into what, into the plane of the board. So that means on every element the force is into the plane of the board. तो जब सारे वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, सारे फोर्स वेक्टर्स, दैट मींस कि फोर्स ऑन एवरी एलिमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन. तो आप इसकी इंटीग्रेशन से यू कैन कैलकुलेट दैट व्हाट विल बी द टोटल फोर्स. सो सी, व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट वन some vector quantity by integration, so you need to verify that direction of that physical quantity for different elements is in the same direction, then you can integrate. So force F will be equal to B naught I. Integration of dl will be the total length of the wire loop. So total length of the wire loop is what, 2 pi r. So there's a force and that will be what, in the inward direction. Now see, the same question can be presented in slightly different manner. In what way? I tell you that. You see, if they give you that this is a wire loop, again I take that current is I,
in the backward direction, sorry, in the anti-clockwise direction. Radius of the loop is r, and this loop is h height above the horizon. Center of the loop is h height above the horizon. This point is horizon, so you can take that this axis, this direction is the z direction, and this is the xy plane. This is the xy plane, and this direction is what? Z direction. Again, it is given here that magnetic field B is B naught r cap. B is B naught r cap. So again, this unique magnetic field is what? Non-uniform. And this wire loop is kept inside this magnetic field. What will be the force acting on it? So look at this. If I take this point on the circumference of the wire loop, magnetic field at this point will be around the what? Position vector. At this point also around the position vector. At every point on the circumference, it will be around the position vector. At this point, I calculate that this magnetic field will have one component in the, if this angle is theta, this angle is also theta. So one component of this magnetic field is B naught cos theta along the radially outward direction, and one component along the vertically upward direction, B naught sin theta. B naught sin theta, that is along the z direction. Is that clear? That will be along what? Z direction. So here a component that will be along z direction. And this thing you can verify at every point that one component, if this angle is theta, this angle will also be theta. Magnitude of magnetic field at this point is B naught. Its direction is along this direction. So along this direction will be B naught cos theta, and along this direction will be B naught sin theta. So that means what? In this case also, at every point on the circumference, eventually you will find, because magnetic field is like this, magnetic field एक conical surface के along आ रही है ना, conical surface के along. So at every point on the circumference of the ring, जो magnetic field होगी उसका magnitude तो B naught same होगा, because r cap is what? Unit vector. तो magnitude B naught होगा, but direction इस तरीके से होगा. और इसका एक ही component ring, on the ring it will be along radially outward direction, and one component at every point will be along the positive z direction. तो जो positive z direction में है उसका magnitude भी same है सब जगह, what? B naught sin theta, और direction भी same है, it is what? Vertically upwards. Magnitude भी same और direction भी same, B naught sin theta, so that becomes what? Uniform magnetic field. That means because of B naught sin theta, the force will be what? Zero. Because that becomes what? Uniform magnetic field. और जो B naught cos theta है, ये क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड. यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एट एवरी पॉइंट द फील्ड वाज व्हाट? B naught. यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड इज व्हाट? B naught cos theta. And everything else is what? Same. So यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का? It will be, यहाँ पे भी आप डायरेक्शन निकालोगे, so that will be what? B naught cos theta. Current I, the force will be what? It will be in the downward direction. यहाँ पे फोर्स किस ओर आएगा? Downward direction. Is that clear? ये फोर्स यहाँ पे किस ओर आए? Downward direction में. So that means की force F will be, जो force F है, that will be B naught cos theta into I into what? 2 pi r, and the force will be along the it will be along the negative z direction. और cos theta की वैल्यू डालोगे from the figure B naught, because this theta, so this angle will also be theta. So the value of cos theta will be what? R divided by this distance, hypotenuse of this triangle. So cos theta will be R divided by square root of R square plus H square. This R and this H, so this will be square root of R square plus H square. There's a B naught cos theta into I into what? 2 pi. Is that clear, students? This is clear ना? आप समझ गए? मतलब फिगर का प्रेजेंटेशन डिफरेंट था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है
इस तरीके से था कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सर्कमफेरेंस पे इट वाज बी नॉट, बट वो डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स नहीं थी, वो बिल्कुल पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग इस तरीके से डायरेक्टेड थी कोनिकल सरफेस के फॉर्म। आपने उसका एक एक कंपोनेंट किया, अपवर्ड्स आया सबका, मैग्नीट्यूड भी अपवर्ड कंपोनेंट का सेम, तो दैट बिकम्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और एक जब करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में होगा, तो द फोर्स ऑन दैट टू बी व्हाट जीरो, सो बिकॉज ऑफ दैट कंपोनेंट बी नॉट sin थीटा फोर्स बिकम्स व्हाट जीरो। और जो रेडियली आउटवर्ड्स कंपोनेंट है बी नॉट cos थीटा is not uniform because the force, the magnetic field is directed in the different direction. So due to that, the force will be B naught cos theta into I into 2 pi r. As in the previous question, we had taken the radially outwards component. We get the value of cos theta from the field. So students, all the best. Next time, in my next video, I'll send you the solution of another very important question, which is related to this, but not exactly like this, और वो बहुत ही important question है. So see you till then.